So hello students, now we will see the theorem 7.4. Let x be a non-space over K and f be a non-zero linear functional on x. If E is an open subset of x, then f of E is an open subset of K. So proof होगा since f is non-zero, there exists some f A belongs to x such that f of A equals to 1, and let x belongs to E. Since E is open, there is some r greater than 0 such that अगर E open होगा तो एक बॉल कंटेंट करेगा, वो होगा U of XR subset of E. So if norm of K less than R by A का norm, then X minus KA less than E. Okay, if X less than R by A का norm, then X minus KA belongs to E. ओके, ये कैसे आया? ओके, सो हमको पता है ये x प्लस के आर बिलोंग्स टू ई होता है. ओके, सो यहाँ पर होगा x माइनस के बिलोंग्स टू ही अगर नॉर्म ऑफ और मॉड्यूलस ऑफ के लेस देन आर बाय ए. इसको आप याद रख लेना ये स्टेटमेंट को. ओके, इफ मॉड्यूलस ऑफ के लेस देन ए का नॉर्म, देन x माइनस के ए बिलोंग्स टू ई, which imply f of x minus k belongs to f of e. Thus small k dash belongs to k such that f of x minus k dash less than r by norm of a subset of f e, which shows that f of e is open in k. Okay, which completes our proof. So see the next theorem 7.2. Let x be a linear space over K and y be a subspace of x which is not a hyperspace in x, and if x1 and x2 are in x but not in y, then there is some x belongs to x so that for all t belongs to 0, 1, tx1 plus 1 minus tx does not belongs to y, and tx2 plus 1 minus tx does not belongs to y. If x is non-space, then y complement is connected. So हम solution देख देते हैं. So if tx1 plus 1 minus tx2 does not belongs to y for all t belongs to 0, 1, then let tx1 plus 1 minus tx2 belongs to y. ये है कॉन्वेक्स का कंडीशन फॉर t belongs to 0, 1. लेट t के प्लेस में अगर हम s belongs to 0, 1 लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sx1 plus 1 minus sx2 belongs to y, which implies x1 plus 1 minus sx2 equals to y for all y belongs to y, and let x3 belongs to span of y comma x1. Let x3 belongs to span of y comma x1. We imply x3 equals to y1 plus kx1, where y1 belongs to y and k belongs to k. Then x3 equals to y1 plus x1 के प्लेस में ये लिख लेना, ये यहाँ से कैलकुलेट करके x1 लिख लेना आप. So x3 is equals to y1 plus ky by x minus k into 1 minus sx2 by x, which imply x3 belongs to span of y comma x2. ये y ये भी है और x2 है, तो span of y comma x2 हमने लिख लिया. ओके, सो x3 belongs to span of y comma x1 भी है and x3 belongs to span of y comma x2 भी है. So span of y comma x1 equals to span of y comma x2. Since y is not hyperspace in x, we have span of y comma x1 not equals to x. Let x belongs to x, then x does not belongs to span of y x1. Assume that x equals to x2. So tx1 plus 1 minus tx does not belongs to y for any t belongs to 0, 1. And if t equals tx1 plus 1 minus tx belongs to y, then tx1 plus 1 minus tx equals to y y2. Then x equals to y2 minus tx1 divided by 1 minus t. So यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया x का वैल्यू. सो x इक्वल्स टू y2 बाई टी 1 माइनस टी minus 1 minus t into x1. So that is x belongs to span of y x1, which is a contradiction to the choice of a. So now assume that y complement is not connected, that is y complement equals to s1 and s2, where s1 and s2 non-empty disjunct upon subset of y complement. So let x1 comma x2 belongs to s1 s2, then x1 comma x2 does not belongs to y.
सो अगर डज नॉट बिलोंग्स टू वाई है तो वाई कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा ये. सो देन माइनस टी एक्स वन प्लस वन प्लस टी एक्स बिलोंग्स टू वाई कॉम्प्लीमेंट. टी के प्लेस में माइनस टी पुट कर लिया एंड एज इट इज टी एक्स टू प्लस वन माइनस टी एक्स वन belongs to y complement where t belongs to 0 comma 1 and either minus 1 to 0 t belongs to. So define minus alpha is mapping from minus 1 to 1 to y complement. So alpha of t equals to minus tx1 plus 1 plus tx and t belongs to minus 1 to 0. Similarly tx2 plus 1 minus tx where 0 less than t less than x. Okay, so यहाँ पर हो जाएगा देन अल्फा इनवर्स S1 एंड अल्फा इनवर्स S2 आर डिसजॉइंट. लेट अल्फा इनवर्स ओके लेट अल्फा इनवर्स S1 एंड अल्फा ओके ये जो है लैम्बडा बिलोंग्स टू ये है ना अल्फा इनवर्स S1 एंड अल्फा इनवर्स S2 आर डिसजॉइंट. सो लैम्बडा बिलोंग्स टू अल्फा इनवर्स S1 इंटरसेक्शन अल्फा inverse S2. So lambda belongs to alpha inverse S1 intersection S2, which imply alpha of lambda equals to S1 intersection S2, which is a contradiction. So which is a contradiction. So alpha inverse S1 and alpha inverse S2 are open because S1 and S2 are open in Y complement and alpha is continuous. That is minus 1 to 1 is the disjoint union of the non-empty open subset minus open subset alpha inverse S1 and alpha inverse N2. So which is a contradiction to the connectedness of minus 1 comma 1. Therefore Y complement is connected. Okay. So this is your also important theorem. So मिलते हैं अगले वीडियो में.